Good evening, everyone. Dr. Raj Chandra Jha needs no introduction to this group. But since it is customary to introduce the speaker, I'll take the privilege of speaking a few lines about him. Dr. Jha is a renowned orthopedic surgeon based out of Ranchi. Besides his professional activities, he is deeply involved in philanthropy in and around Ranchi and other places of the state. Besides his profession, Dr. Jha has keen interest in literature, art, and current affairs of the country. So without much ado, I'll hand over the podium to Dr. Jha. Over to you, sir. Simple one-liners that should suffice that I'm practicing orthopedics in Ranchi. Uh, and today's topic is relevant to my specialty. And this is medical management of chronic back pain. It's just customary to define something like what is pain. Now we can talk for sessions together about pain, different aspects. उसके बहुत से आयाम हो सकते हैं. But for me, the definition as adopted by International Association for the Study of Pain, ISASP हम लोग कहते हैं उसको. So it is defined as an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. A very simple definition that the damage may be actual and it may not be actual but potential. We will come to some other aspects beyond the definition of pain as accepted internationally and recommended by International Association for a Study of Pain. So medical management of chronic back pain, and we shall be talking for the next half an hour about different aspects of it. The next is an overview. These are some accepted figures that 8 out of 10 people will experience low back pain at some point in their life. And besides the common cold, low back pain results in more work days lost than any other physical affliction in persons under the age of 45, the most productive and creative year. Low back pain at times is referred to as lumbago or waist pain, and as the name implies, this affects the lower back. In medical terminology, we call it lumbar region. And the commonest area of back pain is low back. Sometimes it refers to buttocks or thighs always. An important that I wanted to share with the learned audience this evening is that we are historically predisposed to suffer from pain. And not recently, for about 2 million years, that is when Homo erectus, we were there as Homo erectus. Accepted figure is it was about 2 million years back when it became erect, walking on 2 legs. The arms became shorter, the legs became longer, and while walking or performing day-to-day activities then and even now, we are liable to suffer from backache. That is one. But backache, why lower backache particularly? Lower backache because lumbar region, the lower back bears most of the weight of the body. And the most of the movement takes place at this. Because the dorsal vertebrae जो हम लोग के रिब्स छाती के साथ जो जुड़े हुए होते हैं 12 वर्टिब्रे, उस पर मोशन उतना नहीं होता है, लेकिन डॉर्सो लंबर जंक्शन से नीचे मूवमेंट होता है, सामने झुकना है, साइडवेज कुछ काम करना है, तो उसमें तो मोशन ज्यादा है, वेट बेयर ये पोर्शन ज्यादा कर रहा है, इसीलिए यहाँ बैकएक होने के चांसेस ज्यादा है. When we talk on any topic with a medical or non-medical person, the first question that is usually
arises in our brain, maybe because what can be the causes and what are the likely causes of any pain. We are talking today about lower back pain. It's very simple to understand if we categorize it, simplify it, that any disease, any medical problem can have only a certain number of what we call etiology, causative causes. One is congenital, that is born with, we are born with certain deformities, malalignments that may lead to pain. The other is trauma. We are not discussing trauma कि चोट लग गई, तो चोट की वजह से दर्द होगा, हल्का सा रेफरेंस आ जाएगा, passing reference, but basically we are not discussing that today. Then it can be infective, सिंपल पायोजेनिक इन्फेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, बैक्टीरियल कहीं घाव हो गया तो वो वर्टिब्री में भी, लोअर बैक में, स्किन से लेकर सॉफ्ट टिश्यू से लेकर बोन्स तक हो सकता है. तो ओस्टियोमाइलिटिस अगर बोन में हो गया तो उसको कहेंगे. इसके अलावा क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक डिजीजेस हो सकते हैं. उसमें जैसे एक कॉमन कॉज आजकल जिसके बारे में हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, बोन्स बिकमिंग ब्रिटल फॉर डिफरेंट रीजंस. इसके अलावा इन्फेक्टिव में एक होता है पायोजेनिक एक्यूट, एक होता है क्रोनिक इन्फेक्शंस कुछ होते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, लोअर वर्टिब्रा में कम होता है, डॉर्सल में ज्यादा, बट देन दिस कैन हैपन देयर. एंड दिस कैन बी न्यूप्लास्टिक, बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, कैंसर ट्यूमर हो सकता है. ऑल ऑफ दिस कैन कॉज पेन इन द लोअर बैक. लेकिन इसके लिए जो ऑडियंस होगा वो बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स वाला, और उसको सब बताना पड़ेगा कि कॉन्जेनिटल क्या क्या इश्यूज हैं, इन्फेक्टिव क्या क्या हो सकता है. दैट्स अ लॉन्ग लिस्ट. दिस सेशन कैन गो ऑन एंड ऑन. मेरे गुरुजी जो ऑर्थोपेडिक्स के थे वो लोअर बैक एक पर 3 महीने पढ़ाए थे हम लोग. बट टुडे विल कन्फाइन टू सम एनाटॉमिकल रीजंस जो स्ट्रक्चरल है, और इक्वली इंपॉर्टेंट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. तो पेन जो हम लोग बात कर रहे थे कि आज की जिंदगी में हम लोग चेयर बॉर्न हो गए, यस, बट एंड देयर इज नो अदर वे. बट सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, standing for long periods of time without moving, poor postures, sitting or sleeping or standing, lack of regular exercises, obesity, these are some of the causes which can lead to anatomically lead to lower back pain. Then I mentioned the word psychological. Is there a psychological? Yes, psychological, psychiatric as well. This is festival season, very near to us. होली में किसी की पत्नी ने डिमांड कर दिया कि मुझे इसमें एक गहना दिलाओ. The husband doesn't comply with her request. She may have a severe backache in the morning and she may not get up from the bed. तो इस एक बड़ा सेगमेंट है ये. लाइटर वेन में मैंने कहा, बट देन लोअर बैक पेन के बारे में एक स्टडी है कि a huge number of cases are actually what we call psychosomatic rather than somatic, anatomical, physiological से ज्यादा. उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे. डे टू डे एक्टिविटी में what can cause lower back pain? Lifting heavy objects, and that too incorrectly. We have to know the right way of picking up objects from. कैरिंग, आजकल बैकपैक लेके सब बच्चे भी चलते हैं, हम लोग ऑफिस गोअर्स भी चलते हैं, बहुत लोग चलते हैं बैकपैक. One has to know what is the right way of carrying a backpack, heavy backpack. It has to be on both shoulders, not on one shoulder. And then certain activities which need and which demand excessive bending at the waist level. कमर से नीचे झुक के बहुत सारे काम करने हैं. किसान खेत में कुदाली चलाएगा, खुरपी चलाएगा. जो रोड पे कोई मजदूर है पत्थर तोड़ने वाला, वो झुके हथौड़ा चला रहा है. तो ऐसे बहुत सी एक्टिविटी इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक लाइफ में भी होता है, वेयर यू नीड टू बेंड डाउन रिपीटेडली, and that may lead to back pain. And one problem which is mentioned in that slide is obesity. This has become a global problem these days. एक तरफ भूखमरी है, malnutrition, undernutrition है, दूसरी तरफ
ओबेसिटी, ओवर न्यूट्रिशन भी एक वजह हो सकती है, और सीडेंटरी लाइफस्टाइल. As we become obese, the abdominal girth increases and it adds to weight on the lower back, and that causes pain. There are physiological reasons, like a lady in advanced stages of pregnancy. The front portion protrudes and there's a backward bending and pressure on the lower back. When we were just mentioning about psychological or psychiatric factor, there should be an awareness about the social issues that may contribute to chronic back pain. One is job dissatisfaction, and this is very important. The loss of ability to work because of some injury, some disease. The patient is bedridden. He has a physical problem, but what predominates over the physical problem is the psychological aspect of not being able to work. Then one important that this is in industry. This is about pursuing disability compensation. And this makes our life tough, whether the patient actually suffers from backache or is malingering. And this is happening very often. I am in Jharkhand. I know about coal industry, a little bit of coal industry. There is a provision that somebody reporting that he or she is not in a position to work, the job may be given to his or her ward. For this reason, many people, they pose to be suffering from lower backache, and after a certain time, they actually start feeling that they are not able to work, or they go to their senior officers and actually say so. Then the family dynamics, the financial issues, loss of ability to participate in recreational activity, these are the factors which may, without any anatomical defect or disease, may cause chronic low back pain. This has to be borne in mind. As a doctor, we come across such problem. Just a passing reference about assessment of back pain. As students of medicine, in third year, we learned that when the first thing is taking an history, आपको कब से दर्द है, कैसे शुरू हुआ, आप कोई वजन भारी सामान तो नहीं उठा रहे थे, आप कहीं से फिसले तो नहीं, कहीं से गिर तो नहीं गए. These are the questions, history taking. Then is simply touching the patient. And then pressing on the affected area. Patient बताएगा मेरे यहाँ पे दर्द है, तो आप उसको पहले छू के देखते हैं, फिर दबा के देखते हैं, फिर परकसन हम लोग हथौड़े से भी ठोक के देखते हैं. These are certain steps in clinical examination of the patient, which cannot be bypassed. Once the examination is complete, the history taking is complete, then comes the question of advising certain investigation. Simple hematological blood or urine का, उसके अलावा simple X-ray and advanced diagnostic facilities आजकल हम लोगों को available है, MRI, CT scan, कुछ भी करवा सकते. That helps us in assessing the cause for. One thing that needs to be mentioned here is that when we are dealing with lower back pain, one thing that has to be borne in mind is that lower back pain most of the time is because of muscular spasm. It's not only the bone or the structures around the bone, like ligament, disc we'll talk later on. Most of the back pain have an element of muscular spasm, and muscle pain जिसको कह सकते हैं. And when we come to the actual treatment part, we have to bear this in mind, so that only pure analgesic pain relieving agents or anti-inflammatory, जिसमें सूजन भी कम होता है, that may not suffice. We have to add some muscle relaxants because muscle have gone into a spasm. ये next slide में आशुतोष जी
जरा सा स्पाइन का एक बार लैटरल व्यू मैंने एक स्लाइड बनाया था, इसको जस्ट पासिंग रेफरेंस में, इसके बाद वाला स्लाइड जो, हाँ, या स्पाइनल कॉर्ड, इसमें स्पाइनल कॉर्ड लोअर बैक एक की बात कर रहे हैं तो लंबर स्पाइन में है कि उसमें एक स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक। मैं अपने मरीज को हिंदी में कहता हूं कि ये चौखुटा चौखुटा होता है हड्डी, और उसके बीच में एक कुशन जैसा, गद्दा जैसा रहता है, जिसको हम लोग डिस्क कहते हैं। इसमें इतनी सारी बातें हैं जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, इफ यू द स्लाइड्स आर विजिबल। एक तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, दैट इज सिंपली weakening of the bones. When the bones become porous, osteon means bones, porous is everybody knows. Osteomyelitis is infection, pyogenic infection of the bones is called osteomyelitis. Then an important डिस्क प्रोलैप्स के बारे में आप सबने सुना होगा, और मैं प्रतिदिन डिस्क प्रोलैप्स के केसेस देखता हूं। उसको कुछ हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं, कोई साइटिका बोलते हैं, जब रेडिएटिंग पेन होता है, अलग अलग ढंग से। लेकिन डिस्क एक इंपॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर है, एनोमलीज और डिफेक्ट्स इन द डिस्क। व्हाट इज द डिस्क? दिस इज अ सॉफ्ट कुशन लाइक स्ट्रक्चर between two vertebrae. This is soft. The vertebrae are hard bones. Then there is a term called spondylolisthesis. This is very simple. Maybe we have a slide. When one vertebra slips anterior, in front or behind, the upper vertebra slips in front or behind the lower vertebra. This is called technically as a spondylolisthesis. And another similar sounding word is spondylosis. सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में आप सब ने सुना होगा, जिस एज ग्रुप में हम लोग हैं, सम यंगर वंस आल्सो, दे मस्ट हैव हर्ड अबाउट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. Cervical relates to neck. Similarly, there is a term lumbar spondylosis, that about lower back, lumbar region. What does spondylosis actually mean? Simply, this is a process of degeneration of the bones and joints. And just a fleeting glimpse at this slide will show you the disc, the vertebral body, and what we call facets. It's a complicated joint, but anatomy is not our concern today. But this one slide should suffice. Terms I have explained. I like to talk for a few minutes about herniated disc, prolapsed intervertebral disc. This is PIVD, जो term दिया गया. It's not always prolapsed. हम लोग बोलचाल के एक आदत सी पड़ गई है. This slide shows it. The types of herniated disc, it may degenerate, that may cause pain. The prolapse is very commonly used, that it's moved away somewhere from its original position. Expulsion, it may just come out of the joint space. दो वर्टिब्रे के बीच में जो joint है उससे पूरा बाहर निकल गया. This will cause pain. So disc is an important cause of it. It's a major chunk of patients, non-traumatic, जहाँ चोट नहीं लगी है उसके patient जब आते हैं उसमें it's a major portion of. And if this disc irritates or presses upon the emerging nerve roots, जो दो vertebrae के बीच में gap होता है उससे निकलते हैं, then that pain may radiate, what we call radiculopathy, to one of the two buttocks, to thigh, and to toes. Spondylosis I have described that it can be called the arthritis of the spine. Like we have an arthritis of the knee joint, there can be arthritis of the spine. The bone surface become rough. There are protrusions. गुलाब में जिस तरह के कांटे होते हैं उस तरह से वर्टिब्रे के बॉर्डर्स पे, कोने पे हड्डियां निकल जाती हैं. वी टेक्निकली कॉल देम ऑस्टियोफाइट्स, लेकिन वो होता है गुलाब के कांटे जैसे. Spondylolisthesis, I have explained that this is a
स्लिपिंग ऑफ वन वर्टिब्रा। एक स्लाइड में हमने ये भी दिखाया है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, वो समझ में आ जाएगा। आशुतोष जी अगला जो होगा उसमें लिस्थेसिस दिख जाए। यस, you can see that one of the vertebra has slipped forward over the lower vertebra, and this will cause pain. And there are grades of spondylolisthesis. If the slip is, say this is the alignment, if the slip is 25% of the contact area, it is grade 1. If it is 25 to 50, it is grade 2. 50 to 75 is grade 4. If the complete dislocation, it is labeled as grade 4. ग्रेड 3 से ग्रेड 4 में आ गए, बट एनी ग्रेड दैट विल कॉज सम डिस्कम्फर्ट एंड ache and pains at the lower back level. एक स्लाइड और इसके बारे में, उसके बाद हम लोग और बात करेंगे अच्छी तरह से। इसके एक और आगे हम लोग बढ़े, बटक पेन। इसके बारे में हम लोग इसलिए बताना चाहते थे कि मोस्ट ऑफ अस while sitting in the office, in our chamber, uh, in marketplace, we carry a wallet in our hind pocket. This is this not necessarily lower back, but in the buttocks. This is an important cause of pain in the buttock region, and it's because of irritation and constant pressure on a muscle called piriformis, and it has been labeled as piriformis syndrome. एक पतला सा ये फीते जैसा मसल होता है जो सैक्रम से लेकर नीचे तक अटैच्ड होता है। इसके बाद हम लोग 1 मिनट बात कर लें। दिस इज फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक एक, when to seek medical attention. And again, here we will not be devoting much time on pain arising out of injury. ये पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो मैंने कहा कि आप लोअर हाइंड पॉकेट में पैंट के जब वॉले भारी वॉले लेके बैठेंगे काफी देर तक, तो this will cause pain in your lower buttocks and thereafter in your lower back. तो एक्सीडेंट होगा, किसी को चोट लग गई, उसके साथ जो भी प्रॉब्लम होता है, यू हैव टू सीक मेडिकल अटेंशन। बट for those who are above 50 years of age, you may not have suffered from a major trauma, major injury, even a minor trauma, like missing a few steps while walking or downstairs, or landing on your buttocks. You slip in the bathroom, land on your buttocks, and the pain doesn't go away after a few hours or days, then you must seek medical attention. If you are a patient suffering from some medical disorders like asthma, you are on prolonged steroid use, COPD, rheumatoid disorders, then you must seek attention. Even if you have no pain, you should consult. If you are over the age of 50, these are red flags. Particularly females who have weak bones, if they are suffering from osteoporosis, either because of advancing age or because of certain intake of medicine, regular intake of medicines, which lead to osteoporosis. Steroid is the most notorious among those. They must seek medical attention. Any person above the age of 70 need to seek medical attention for prevention of major catastrophe or for management if the catastrophe has already occurred. The commonest being fracture of the vertebrae or fracture around neck femur, jo kulhe ka jo. Anyone having a history of cancer, because technically we call it metastasis. The cancer is in some other organ like breast or in male's prostate, but the cancer cells have spread to bones. We call it secondaries or the metastasis, and this may cause pain, and this needs proper management. And any lower back pain which is worse at rest, this needs to be discussed with your treating physician or a specialist. And any unexplained weight loss over a period of time,
that should be that should be an alarm that you must consult your doctor. There can be certain diseases like tuberculosis, you may cause loss of weight. This can be malignancies, cancers, primarily of the bone or secondaries from other organs. These are, we have so long been discussing about the likely causes of back pain. Now, what can be the remedial measures? This part I have simplified to an extent that this is not meant for medical student, but they have to be aware of this. What do we do so that we don't suffer from regular lower backache? If I have to suggest one measure before I come to the other modalities of treatment, the key, the mainstay of treatment in such cases would be regular exercises so that you keep all your muscles strong, muscles especially around the vertebrae, paraspinal group of muscles. And if you can't do specific physiotherapist recommendation, you can't follow them, then the best way is to walk. If you walk, that will take care of your knee joints, your heels, the hip joints, and the back as well. Is that all? No. Simply exercising, walking, making your muscles around the vertebrae strong will not take away pain in all cases. You will need some medication. Medication again will depend on the etiology, the cause of pain. But one thing is common, that we have to use certain pain relieving agents, what we call analgesics, or anti-inflammatory. Plus, the main cause of back pain, if it is because of some structural anomaly from birth or acquired later on because of some injury or disease, then that structure has to be corrected by surgery or whatever means. If it is an infection, bacterial pyogenic infection है, तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक देना होगा, रेस्ट देना होगा, simple, an abscess that need to be drained. If it is tuberculosis, it has to be treated with prolonged, long use of anti-tuberculous drugs, initially some rest, some support, and thereafter exercises. In acute cases, when suppose I'm sitting here and I have had a busy day and I'm still sitting, I was sitting before I came home, I'm having some pain. What can I do immediately for relief? These are some physical elements, application of heat pads. On the other extreme, application of ice, आजकल cold pack हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं. और कुछ इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव जो हम लोग का मेडिसिन में कहते हैं, उसमें एक्यूपंक्चर वगैरह है, जिसके बारे में मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, बट कभी मौका आएगा तो उसको देखा जाएगा, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं. एक्सरसाइज, पेन रिलीविंग एजेंट्स, and treatment of the primary cause of. This may be medical, this may need surgery, it may become surgical manipulation. And one question that was asked through many audios related to osteoporosis. Osteoporosis, as I said, is the weakening of the bone, and these ladies suffer more from it, particularly in the postmenopausal age, when the estrogen protection is not there anymore. Osteoporosis per se, on its own, doesn't lead to back pain. There can be microfractures and there can be actual fractures because of osteoporosis that will cause pain. So we have to prevent osteoporosis, and we have to be very concerned and careful about ladies who are past 45 and 50 years of age, because they will invariably suffer from some degree of osteoporosis, and we have certain measures besides exercises
and immediate for pain relief, whatever analgesic we choose. And as I mentioned in the introduction, that when we are dealing with lower back pain, simple analgesics may not suffice. What needs to be added is what we call a group of drugs called muscle relaxants. There are many in use these days: thiocolchicoside, tolperisone. These are very popular. A few years back, chlorjoxazone was on the top of the list, methaqualone. There are many agents, tijanidine. But prevention of osteoporosis will need a separate session, because osteoporosis, just a passing reference, that from 2001 to 2010, the World Health Organization had declared this decade, dedicated this decade to detection, prevention, and treatment of osteoporosis. Before 2001, even I didn't have any idea about the magnitude of the problem faced by a large population because of osteoporosis. We were not very wise about the methods of prevention and methods of treatment. To concretize, basically, you have to keep your bones strong, so you have to keep on moving, exercising. Then in ladies, vitamin D these days have become very important consideration, because कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का सवाल पूछा गया था, उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग डील कर लेंगे. विदाउट विटामिन डी, कैल्शियम विल नॉट बी एब्सॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय द बॉडी. सो विटामिन डी, कैल्शियम, and at an age where the rate of new bone formation is less as compared to the rate of destruction of the bones. Technically, osteoblastic activity is less, osteoclastic activity is more. Then we have to use some agents which will promote bone formation and retard bone destruction. Here comes the role of bisphosphonates and many other drugs that we have in our armamentarium. But bisphosphonates I specifically mentioned because these are easily available, mostly well tolerated if instructions are followed by the patients, and affordable to a large population. The other alternatives that we have, and they are good alternatives, are a little costly. Some are injectables. Injections have to be taken daily. One calcitonin is a nasal spray, which most of our patients don't like to take daily. But then by whatever means, we have to take care of osteoporosis. Then if we can, so आशुतोष जी एक स्लाइड होगा हम लोग का जो लो बैक पेन के एक्सरसाइजेस को लाइन डायग्राम से बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है. इसके बाद वाला ही होगा मेरे. यस, बैक एक्सरसाइजेस. यूट्यूब पे बहुत सारे बैक एक्सरसाइजेस हैं और अच्छे हैं. सम फ्रॉम वेरी स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स. मायो क्लिनिक वाला है. सम फ्रॉम वेरी रिप्यूटेड ऑर्थोपेडिक क्लिनिक्स, लिवरपूल का है. लेकिन इसमें जो मैंने कुछ चूज करके दिया है, दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज. आशुतोष जी कैन शेयर दिस स्लाइड इन आवर ग्रुप लेटर ऑन. तो क्या हो जाएगा कि मतलब रिवाइज कर पाएंगे, और जिस पर्सनल क्वेरीज आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर. Muscle relaxant. This I have mentioned about the musculoskeletal disorder, painful musculoskeletal disorder having two components, one inflammation, the other the muscle spasm. We have discussed this, that we need to add muscle relaxant. Rationale I have explained. This is explained through a slide as well, why combining the two, an anti-inflammatory analgesic agent with a muscle relaxant will give better results when we are dealing with lower back pain. रैशनली फॉर कॉम्बिनेशन हम लोग बात कर लिए. उसके बाद एक दो मिनट हम लोग को इस पे ध्यान देना होगा. दिस इज मोर फॉर डॉक्टर्स बट जनरल अब इसका होना चाहिए कि वी शुड ऑल बी अवेयर ऑफ दिस. द पॉइंट्स टू बी नोटेड इन केसेस ऑफ back patient presenting with backache. Age of the patient is important. Then any history of malignancies, this I have said.
unexplained weight loss, long-term use of steroids, then any history of worsening of the pain at rest. Normally, any painful condition of bone and joint get aggravated on activity. But there are conditions, most important being tuberculosis of the spine, where rest aggravates pain. रात को ज्यादा दर्द होता है. Typically, this is what. सर सो जाते हैं तो आराम नहीं मिलता और ज्यादा दर्द होता है. And then, if what another important question is whether the pain is limited to the lower back or it spreads, what we call radiates to one or both the limbs, or or if there is any feeling of weakness or numbness in the lower limbs. If there is, it has to be taken very seriously. That means that the patient may land up with paraplegia, nerve पे pressure पड़ रहा है या damage हो रहा है. Unrelated question: if the back pain following onset of back pain after some time, is there a loss of control over urination and defecation? पेशाब पैखाना करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है, कंट्रोल तो खत्म नहीं हो रहा. That again is a ominous sign. Then passing reference जो किया था इंडस्ट्रियल वर्कर्स में, दिस इज कॉमन वर्क स्टेटस उसका पूछेंगे. कोई केस कोर्ट में तो नहीं उसका पेंडिंग है जिसके लिए वो ये कर रहा है कि हमको नहीं जा सकते हैं. कॉम्पेंसेशन वाला इशू है. डिप्रेशन, साइकियाट्री की जब मैं बात कर रहा था तो देयर आर केसेस वेयर द पेशेंट doesn't have any problem in the back, but he always comes complaining of lower back. That will be in the domain of psychosomatic disorders. We have to take a psychiatrist on board while we are trying to treat him. Some slides are dedicated to some practical tips in our day-to-day life. We can call them preventive. How do we lift weights? Normally we just bend from our back. We have a slide to this effect, Ashutosh ji. Yes, this shows the correct way of lifting. Don't bend down from your waist. Try to sit down on your knees. Be close to the object that you are trying to lift. Then lift it, carry it close to your body, and then stand erect. So this is one way of preventing backache. Then standing. Many people, their job needs to, jobs are like they have to keep on standing for hours together. What can they do? One is one has to stand in an erect posture. आर्मी वालों की इसकी अच्छी ट्रेनिंग होती है. और उसमें भी if you are allowed, you have to keep on shifting weight from one leg to the other. अगर दोनों पे खड़े रहेंगे लगातार तो that will cause strain on your lower back. एक छोटा सा ट्रिक जो आपका ऑब्जर्व भी नहीं है, वो आपको नाराज होगा कि क्या कर रहे हो, क्यों मूव कर रहे हो. वो हम लोग कहते हैं कि आप अपना एब्डोमिनल मसल्स जो है पेट को अंदर कीजिए, बाहर कीजिए. उससे भी आपका थोड़ा सा बैक पे स्ट्रेस कम होगा. और अगर अलाउड है तो आप एक व्हाट कैन यू डू, एक लेग को कीप अ स्टूल इन फ्रंट ऑफ यू, छोटा सा मछिया जैसा, एक पैर को उस पे रखें, एक पैर को जमीन. If it is at all allowed, if not, then you have to keep on shifting weight imperceptibly कि कोई इस पर नाराज ना हो जाए. Then so there's a slide which shows the proper way of standing. सामने झुक के नहीं, तन के खड़ा होना है. ये सीखना पड़ेगा फौज के लोगों से. और तन के खड़ा होने में ये नहीं कि लॉर्डोसिस जिसको हम लोग कहते हैं, दादा जैसा छाती इतना नहीं निकाल लीजिए कि बैक पे प्रेशर आ जाए. So the third one, this is the right way of standing. The first two in this is the wrong way. झुक के भी नहीं चलिए और बहुत सीना तान के भी नहीं दिखाना है, सीधा रहना है. जब बैकपैक के बारे में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में है जो जिक्र तो कर दिया था, लेकिन ये स्लाइड अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट हम लोग कर सकते हैं. If you are carrying a backpack, the strap should be across both the shoulders, not on one. This will cause pain in your lower back.
Sitting, most of us keep on sitting, that the nature of job is such that it demands sitting for long time. I am to this evening I am sitting in my dining space because the chair here are straight backed. लकड़ी की कुर्सियां हैं, सीधी हैं. जो मेरे ड्राइंग रूम में सोफा वगैरह है वो सॉफ्ट है और वो धंस जाता है और उसमें रिक्ला ऐसे पीछे टेक लगता है अच्छा, लेकिन इट्स नॉट एडवाइज. सिटिंग मीन्स यू सिट विथ योर बैक स्ट्रेट, 90 डिग्री पे रहना चाहिए आपके ये बटक जो हिप से ऊपर आपका जो टॉर्सो रहना चाहिए. And if possible, rest your feet on a footstool rather than keeping them on ground for long time. And then there's a new recommendation. If you are not allowed to move from your chair, keep on exercising your ankle joints. Move your ankle up and down. पंजों को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं टेबल के नीचे, किसी के नजर में भी नहीं आएगा. और थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो अपने थोड़ा बैक, ये थ्रो योर हेड बैक, बेंड इट फॉरवर्ड टू द चिन. दो चार बार ये कर लेने से आपके बैक को रिलैक्सेशन मिलता है. So these are some practical tips that need to be done. And this slide shows the right way of sitting, not slouching like this. 90 degree पे torso होगा, hip joint. Or if you are sitting on an stool or a chair, not on the edge. Try to be in the middle of it. गाड़ी ड्राइव हम लोग सब लोग करते हैं आजकल. सामान हम लोग को उठाना पड़ता है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए एक लाइन डायग्रामेटिक ये है कि हाउ व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द रॉन्ग वे. ड्राइविंग में हम लोग ऐसे बैठे या ऐसे बैठे, ये सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. इसके बाद टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम लोग. तो दिस वाज बेसिकली an introduction to some of the common causes of back pain and some practical tips about not landing up with chronic back pain. The medical management part, the technical medical part comes now. Analgesic, anti-inflammatory, we have anti-inflammatory and muscle relaxant we have mentioned. Brief mention about the treatment of the primary cause leading to this backache. And then what are the advancements? These questions will come up. And what are the diagnostic way? I said X-ray will give a lot of information, but not all, because X-ray can tell us about the alignment of the bone, any osteophytes, as I mentioned, thorn like जो हो जाता है, बढ़ जाता है. और ज्यादा information के लिए MRI, that will give us a lot of information. And the other tests to diagnose, to rule, include or exclude certain diseases that may affect lower vertebrae of the lower back. Besides physiotherapy, physical exercises, it may be modern terms we call them physiotherapy exercises. It may be our traditional vyayam, yogasan, like one common exercise or asana that I ask my patient to practice is bhujangasana, sarpasana. These are all extension exercises. उससे रिलीफ मिलता है. तो ट्रेडिशनल जो टीचिंग है ये आसन का, उसमें बैक एक के लिए अच्छे आसन है. वन आई मेंशन्ड इज भुजंगासन. Pranayam, while you keep your spine straight and practice some breathing exercises that helps your spine. What is new in this field? Even a decade or 2 decades back, we didn't have any thing to do for fracture or collapse of the vertebrae. What is new in this field? Everyone amongst us must be familiar about the term angioplasty, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम इतना होता है, उसमें हम लोग बैलून जैसा है, वो कचरा को हम कहते हैं, कचरा साफ करके उसमें फिर नहीं कचरा जमे पाइप. Similarly, we do काइफोप्लास्टी. जो वर्टिब्रा कोलैप्स कर गया है तो वहां एक बैलून लाइक ये मैकेनिज्म से उसको एक्सपैंड कर सकते हैं. फिर वो जैसे वर्टिब्रोप्लास्टी होता है, उसमें सीमेंट डाल के उसको फैला सकते हैं.
Even 2 decades back, this technology was not available, at least in smaller towns, it was not there. We only read about this, and this was being done in advanced countries. Now we are doing it in India as well. That takes care of the deformity resulting out of disease or injury. And it was very common in our days, or younger days, especially caries spine, tuberculosis of the vertebrae, two bodies, two adjoining body used to fuse and become this triangular, what we call gibbous. This can be treated. Vertebral collapse because of injury or in spite of injury because of the weakness of bones. This can now be expanded and strengthened. These are some newer aspects in the management of lower vertebral pain, lower back kick, basically, lower back pains. Uh, the questions that were asked that was about calcium metabolism. Basically, those questions relate to calcium metabolism. Yes, the calcium that we take through our food or through supplements like tablet, capsule, only a part of it, only 10 to 50% of calcium intake is actually absorbed and assimilated and utilized. अगर utilization तक जाएंगे तो hardly 10% is utilized. The other question was about what is better, the natural food, calcium that we get through our food, or supplements. There cannot be a categorical answer because we need to have this, is what we call a required daily allowance. The average is about 1 gram, 1000 milligram to 1300 milligram for average adult. Growing up children, pregnant ladies, very old persons may need more. And those who have some secondary osteoporosis, means because of certain other drugs being used for some other diseases, they may need some more. It has to be a balanced approach. Not having all the calcium requirement through tablets and capsules, not depending on only food for all your calcium requirements daily. The part of this question was, what are the good sources of calcium in our diet? Number one on the list would be, in my list, would be dairy products, milk, yogurt, curd, पनीर, छेना, जो भी मिल्क प्रोडक्ट जो है. उसके अलावा सर्टेन वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकोली दीज डेज वेरी इजीली अवेलेबल. साग, उसमें पालक के बारे में वो ये है कि उसमें चूंकि ऑक्सलेट बहुत होता है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड कर देता है, दो इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. सो वी डोंट, आमतौर पे लोग कहते हैं पालक खाओ हड्डी मजबूत होगी. इट वर्क्स द अदर वे राउंड. Certain dry fruits like almonds, non-veg, egg is a good source of calcium. Some fish, especially the fish eaten with bones. The problem is that in our scenario, in our milieu, dairy products remain the main dietary source of calcium for most. Some patients do not tolerate milk because of lactose intolerance or some diseases where milk is not allowed to the patients. For them, other options are there. Some fruits like जिसको नाशपाती कहते हैं, pears, oranges, they are very good source of calcium. I said it has to be a balance. Part of it through food, part of it through supplements. The older the population, the more the supplement needed. Is calcium itself sufficient? No, I said without vitamin D supplement, it will not. And in older age group ladies, some of the agents which promotes new bone formation and retards the destruction of bone already there, हम लोग बोन मास कहते हैं. बोन मास कहते हैं. और एक जस्ट शेयर कर लेता हूं, एक स्टैटिस्टिक्स जो डाटा होता है कि जो बोन मास बनना है वो 25 साल की उम्र तक बन जाता है. उसके बाद
बहुत मुश्किल होता है नया बोन, तो उसको बचा के रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके लिए डाइट एंड एक्सरसाइज, द मोर यू एक्सरसाइज द स्ट्रॉन्गर योर बोन्स आर। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द वार्निंग सिग्नल्स, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स about deterioration in knee or back. It's always some kind of discomfort while walking, while sitting, squatting, or sitting cross-legged, or for osteoarthritis, knee की बात हम लोग आज नहीं कर रहे हैं, but for those question में knee भी mention था. The earliest sign in my practice, and this is borne out by text solved, while you are walking downstairs, you have a certain pain in your one of your knee joints, usually one, later on both, and it's mostly on the inner side to start with. These are the early warning signs. टेबल पे बैठ के कुछ देर काम कर रहे हैं, बैक में लगा कि बहुत ये हो रहा, पहले तो अनकंफर्टेबल डिस्कंफर्ट लगेगा, उसके बाद एक्चुअल पेन होगा. दीज आर द अर्ली वार्निंग साइंस. Prevention, again, exercise, proper diet, and supplement calcium plus vitamin D plus other agents, bisphosphonates, आजकल biologicals आ गया है, denosumab है, teriparatide है. These are costly agents, but then useful. I think I have answered the questions. अच्छा, acidity वाला problem, अरुण का ये बड़ा था. Yes, that is one questions many people, some of my patients also ask कि कैल्शियम की गोली बर्दाश्त नहीं होती है, कैल्शियम की गोली बर्दाश्त नहीं होती है. Am I visible and audible? There's some problem with that. बत्ती आने जाने से yes sir, there इन्वर्टर was थोड़ा some ये हुआ, problem. तो वाईफाई में. हाँ, बीच अभी में थोड़ा ठीक है. ऑडियो चला गया था आपका. तो ये कि हाँ अभी ठीक है, कैल्शियम, यू कैन स्पीक. कैल्शियम टैबलेट, या हाँ, बर्दाश्त नहीं होता. दिस इज हाउ द पेशेंट रिलेट देयर प्रॉब्लम्स. यस, दिस मे हैपन इन सम पीपल. कैल्शियम से हार्ट बर्न, एसिडिटी लोग कहते हैं, गैस हो जाता है. प्रॉब्लम अरुण जी के सवाल में एक एकदम जो था कि क्या कर सकते हैं एसिडिटी के साथ कैल्शियम का जो रिलेशन क्या है. फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपर एसिडिटी, these days we use certain agents, everybody know about that, जो PPI, proton pump inhibitors, commonly omeprazole, rabeprazole, pantoprazole, lansoprazole, so many prazoles. But problem क्या है कि they will suppress acid production, but they will at the same time retard the process of absorption and utilization of calcium. Then how do you balance this? In my practice, what we do is, if I have to prescribe initially for some, maybe a month or two, prescribe a PPI first thing in the morning, or empty stomach in the morning, prescribe calcium tablets later on in the day or in the evenings. The calcium will be absorbed and acidity will be less. और एक तरीका जो हम लोग कॉमनली ये कहते हैं कि भाई आप कैल्शियम की गोली लीजिए, उसके साथ एक कप थोड़ा सा ठंडा दूध ले लीजिए. इससे अल्सर वगैरह होने का नहीं, बट देन इट इज अ फैक्ट दैट सम ऑफ द पेशेंट्स और मेनी पेशेंट्स, स्पेशली लेडीज, डोंट टॉलरेट कैल्शियम वेल. दे हैव हाइपर एसिडिटी, हार्टबर्न लाइक इश्यूज. तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हो गया. नाउ questions, sir, actual question, yes so sir, audio thank you so and much sir. questions and comments. And Yes, yes, it is a vast topic. yes. So the house is open for questions. Kindly raise your hand. We can wait for some time. And it was really, we you spoke for almost an hour, sir, and you covered everything. Now I can see the first hand being raised, Mr. Varun Kumar. So Varunji, kindly unmute yourself and you can ask your question. थैंक यू सर फॉर दिस सेशन. कुछ दिनों पहले मेरी मदर को ओवरी में सिस्ट का प्रॉब्लम था, तो उनको कोई इंजेक्शन दिया गया था. डॉक्टर ने इंजेक्शन लेने को कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि इससे आपके बॉडी में बोन्स कमजोर होंगे.
तो इंजेक्शन उन्होंने जो ड्यूरेशन था वो उसमें से लिया, वो उस इंजेक्शन को ओवरी के सिस्ट के लिए था वो इंजेक्शन। एंड उसके बाद फिर वो शिकायत करती हैं कि वो पैरों में दर्द होते रहता है, और बोन्स उनका पहले से वीक था, फ्रेजाइल टाइप का बोन्स था। और खुद में मेरे में भी ऐसा लगता है कि बोन्स जो है कि उतना ताकत नहीं मिलता है खुद अपन। मेरा बोन्स हमको लगता है कि कमजोर है इन रेस्पेक्ट टू माय फ्रेंड्स एंड अदर एज ग्रुप पीपल जो है, उनके बोन से खुद मेरा भी लगता है कि बहुत काफी है। और खुद मेरा भी जो साइटिका वाला प्रॉब्लम है, रेडिएटिंग पेन है, पता नहीं कैसे। आई एम जस्ट 28 year old बट स्टिल हैविंग दैट। आई डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड आई वुड लाइक टू गो टू रांची एंड विजिट इन पर्सनल टू यू। वरुण जी, आप रहते कहाँ हैं? वेयर डू यू नॉर्मली वेयर आर देवघर यू सर, राइट नाउ? देवघर, मेरा घर देवघर है। देवघर। देवघर, देवघर, अच्छा। देवघर में मेरे कलीग्स हैं ना, वहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं ना, अच्छे अच्छे हैं सब। रांची कभी आना हो तो मिलिए, अच्छा। खुशी होगी फिजिकली पर्सनली मिलके। बट योर प्रॉब्लम, इट हैज टू बी जी। डिफाइंड एट 28 years of age. Why do you walk? हम्म। Do you walk for at least half an hour daily, or you don't? नहीं सर। That is the problem. तो ये मैं let's come to the point. Besides what we discussed in this session, and ये लंबा हो गया session. Initially, the idea was to talk for half an hour and then half an hour question answers. ये लंबा हो गया क्योंकि मेरा प्रिय विषय है, और it has so happened that I have recently talked to some junior doctors on this aspect, और उसमें वो लंबा हो गया. They wanted it in details. 2-3 घंटे का सेशन था, उसको कंडेंस करके हम लोग 30 स्लाइड पे आ गए थे. उसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल टीचर, टेक्निकल जार्गन नहीं था. तो फॉर यू माय सजेशन वुड बी कंसल्ट वन ऑफ द ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रैक्टिस. डू यू नो एनीवन इन देवघर ऑर्थोपेडिक्स जी के? सर, अभी एक नए नए डॉक्टर आए, के शशि हैं, साउथ के हैं शायद, बट ही इज वेरी प्रॉमिसिंग और अच्छे रिव्यूज उनके मिल रहे हैं। वो एम्स देवघर में ज्वाइन किए. हाँ, वो एम्स जानकारी नहीं है देवघर में बट। ज्वाइन किया उन्होंने. अच्छा। हाँ उनका हाँ, प्राइवेट क्लिनिक भी था यहाँ पर। प्राइवेट क्लिनिक भी है, और वो एम्स में गए हैं, और उनके बाद मेरे पास भी अच्छा फीडबैक जी। है. एक नजदीक में अगर मेरी जरूरत होगी तो रांची बहुत दूर नहीं है देवघर से, कभी आएगा तो यस, और जी, प्रायर उन लोगों की जानकारी मेरी रहेगी मन तो हम में बुला लेंगे सिर्फ आपको. वो कोई फिजियोलॉजिकल भी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं लेकिन आप है, चलना शुरू कीजिए. साइकोलॉजिकल। 28 साल की उम्र में बचपन में दूध पिया है कि नहीं, ये बताइए पहले. पीते थे सर, पता नहीं, बट वो मतलब मम्मी के जितने भी बीमारी हैं सारे मेरे में आ गए हैं। है कि हम लोग कह सकें कि ये हेरिडिटरी डिजीज है, ऐसा नहीं है. लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, यस एंड सर। मोस्ट ऑफ माय कलीग फील लाइक इज बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड द चेंज इन फूड हैबिट्स. हम्म। तो ये जो मैंने बताया वो खाने में ध्यान दीजिए, दूध पसंद लीजिए, पनीर लीजिए, छेना लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट हो गया. आजकल जिनको मिल्क इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से, इरिटेबल बाउल है, ये कई सारे कंडीशंस हैं, उनके लिए सोया मिल्क मिल रहा है, आलमंड मिल्क मिल रहा है, इक्वली गुड. ओके सर। और साधारण फल अभी तो जब आएगा मार्केट में, नाशपाती बहुत आसानी से मिलता है, लातेहार वाला. वो अमृतसर से आएगा, वो बहुत महंगा होगा, लेकिन हमारे झारखंड वाला बहुत आसानी से मिलता है, और बेटर हम्म। वो है ओके क्वालिटी. सर। और यहाँ जो अच्छा, एक मैंने भिंडी, जब मैं मेंशन कर रहा था तो आई शुड हैव मेंशन ओकरा. भिंडी बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम. सब्जियां खाइए, मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, एंड वॉक. और मैं जरूरत पड़े तब एक डॉक्टर से कंसल्ट. यू द प्रॉब्लम हैज टू बी डिफाइंड फर्स्ट. आर यू रियली सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस? अगर यंग एज में ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो किडनी फंक्शन के बारे में हम लोग चिंतित रहते हैं. अगर किसी को रूमेटॉइड वगैरह है तो अलग बात है, अदरवाइज मैनेजेबल है. आप लोकल देवघर में और किसी सर से वो। मिलने, अगर किसी कारण से, इसी कारण में हमसे जी। मिलने के लिए या इवन अदरवाइज आप आएंगे इधर, तो विल मीट एंड डिस्कस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड ओके। इट.
हेरिडिटरी नहीं होता है आमतौर पे, नहीं होता। नहीं, बोन्स के कमजोर होना बस वो हेरिडिटरी जैसा मुझे लगता है कि वही उनके वही बोन फ्रेजाइल। की कमजोरी जो है ना, माँ से आपको विरासत में नहीं मिली है। डोंट ब्लेम योर मदर। उनको तो हुआ, ओवेरियन सिस्ट मैलिग्नेंट था या बेनाइन था उनका? नहीं, वो नॉर्मल था और वो खत्म भी हो गया, बट बेनाइन अभी सिस्ट था, फिलहाल नहीं हाँ है। बेनाइन सिस्ट था, लेकिन तब चिंता लेकिन की बात नहीं है। लेकिन उसके लिए जो इंजेक्शन एक पटना के डॉक्टर ने प्रेफर किया था, मतलब एडवाइस किया था, और हम लोगों ने लिया भी था उस इंजेक्शन को, तो उसके बाद शायद बोन में काफी उन कमजोरी टाइप की आ गई है। स्टीरॉयड एनीवे तो नहीं सर, दिया आई था, विल वही तो ट्राई टू मेरा, विजिट मैंने बार बार, डॉक्टर। अगर मिल जाए तो हमसे शेयर कर लीजिएगा। जो ओके आप सर, बता रहे ठीक है। नॉर्मली स्टीरॉयड वरुण जी आप यूज ओवर यूज या मिस यूज से बोन्स की वीकनिंग होती है। यस। ओके सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू, और भी हैं अभी थैंक यू आप। वरुण जी। या we'll move on now, there I can see many hands raised. तो पहले अवधेश जी काफी देर से ट्राई कर रहे हैं। I'll go to अवधेश जी first and then Pankaj Mani ji, I'll come back to you. अवधेश जी, you can unmute yourself. Yes. सर, दो सवाल थे। पहला तो ये कि ये जो 60,000 यूनिट्स वाला जो वो विटामिन डी की कमी से जो प्रिस्क्राइब करते हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ सर, बिकॉज किसी ने मुझे बोला कि तुम पहले 8 दिन तक 60,000 लेते रहो, फिर एक वीक करके 2 महीना, फिर 1 महीने में एक बार। मेरा वो ब्लड टेस्ट में कम आया था सर, वो 2028 कुछ, सॉरी 22 या कुछ था। तो आई डोंट नो व्हाट इज द राइट थिंग एंड आई एम वेरी स्कैर्ड कि क्या लेना है। दूसरा सवाल सर, एंड दिस इज नॉट फॉर नाउ, आई विल फॉलो अप विथ यू लेटर। मैंने ये सुना था सर कि अबाउट साइकोसोमैटिक एंड सोशल रीजंस फॉर लोअर बैक पेन। और मैं सर वो कंपनी में बहुत दिन काम किया, 32 years, और ये प्रॉब्लम जो है ना, ये बहुत ही अनअटेंडेड है। और इसको ना लोग बहुत बात करते हैं, वेल बीइंग एंड हेल्थ एंड हैन एंड तेन, लेकिन इस तरह की बात कोई नहीं बताया। पहली बार मैं आपसे आज सुना, बहुत क्लियरली आपने बोला कि देखो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल वो सब तो है ही, बट उसके साथ साइकोसोमैटिक है और सोशल इश्यूज है। बट आई विल टेक दैट ऑफलाइन, सेकंड वाला पार्ट ऑफलाइन लूंगा। ये पहले मुझे वो थोड़ा बता दीजिए सर, बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ इस बात से, मेरा विटामिन डी बड़ी वाला कम मैं है बता देता हूँ। जी। हाँ, बहुत कम है, तो ठीक हो जाएगा, नो कॉज फॉर वरी। एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड is that our exposure to sunlight has over the years have been minimized because we don't go outdoors, we are not working in the fields anymore. तो एक स्टडी हुई, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा सुन के, कि बहुत सी बातें इट इज ड्रिवन बाय बिग फार्मा हाउसेस, जो रिकमेंडेशंस होते हैं। इट इज अ फैक्ट, ये हम आप सब जानते हैं कि हम लोग धूप में खुले बदन नंगे बदन तो बैठते नहीं हैं। अगर आपका वो पुराना बैकग्राउंड होगा गांव का, या आपने अपने दादा नाना को देखा होगा, तो बिफोर टेकिंग अ बाथ दे यूज टू रब, सरसों तेल लगा के थोड़ी देर धूप में बैठते थे और फिर नहा के धोती होती पहनते थे, तो उनको मिल जाता था। और सन रेज जब स्किन पे पड़ेंगे और इसमें पोर्स ओपन होने चाहिए, तो विटामिन डी बन जाता था अपने शरीर में। आज के दिनों में बहुत से इंडियन स्टडीज भी हैं हॉस्पिटल, जिसमें कि ये फिगर्स वैरी कर रहे हैं। Some say that 71% of Indian population is deficient in vitamin D. At the other end, there is a study from a very big hospital in India claiming that 97% of Indian population is deficient in vitamin D. Forget about these figures. For you, when vitamin D was launched, the recommendation was that ask your patient to take vitamin D 60,000 international unit capsule, tablet, or sachet, or suspension. Now, nano suspensions are available.
once in a week for 8 weeks, and then once in a month for 4 months. That is good enough for life. This was not right. Now we have reached a stage where you are asked to take 60,000 international daily for 2 weeks, then for alternate days, then weekly. We have to make things simple for our population and affordable. What I do, I'll share with you what I do with my patients. Even if your vitamin D level total 25 cholecalciferol levels are below 10, it's a unit in nanogram में हम लोग मेजर करते हैं ज्यादातर लेबोरेटरीज में. 30 to 90 is the normal value. Values above 100 are called toxic. 20 to 30 को कहते हैं insufficient. 10 to 20 के बीच को कहते हैं deficient. 10 के नीचे को कहते हैं severely deficient. This is a workable, practical classification as I follow. And many of my colleagues believe that this is the right way to approach rather than laboratorical value जो micro units और nanogram कितनों को समझ में आएगा. फिगर बता दीजिए कि आपका 10 के नीचे है, आपको बहुत कमी है. In all such cases, whatever may be the lab value, what we do these days, one capsule or chewable tablet or sachet to be taken with milk or nano suspension, all contain 60,000 international unit, once a week for 12 weeks, 3 months, thereafter once a month for life. ये कोर्स नहीं होता, जिंदगी भर आप खाना आप रोज खाते हैं, विटामिन डी रोज खाना, हर महीने खाना. इनिशियली वीकली फॉर 12 वीक्स. 3 महीना बीत गया, उसके बाद आप एक डेट बना लीजिए. मैं अपने मरीज को पर्ची में लिख देता हूं हर महीने की पहली तारीख को. जब वो पहला 12 हफ्ता 3 हफ्ते बाद 3 महीने बाद आ जाता है. That should sort out your problems. You need not worry. Yes, vitamin D deficiency can cause many problems. Not only weakness of the bone, it is being used for management of diabetes, for hypertension, for psychiatric ailments. This is in fashion. लेकिन उसमें एक चीज मैंने जस्ट कहा जो मेरी बिरादरी पे और जो मेडिकल ये जो फार्मा इंडस्ट्री है उस पर बहुत अच्छा कमेंट नहीं है, बट इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ दैट मेनी इन्फरेंसेस and conclusions from studies from so-called believable institutions, reputable in reputations, have to be taken with a pinch of salt. They are driven by money. Practical approach ये है कि हाँ हर हफ्ते खा लेंगे 2-3 महीने, फिर हर महीने एक दिन बना के उस दिन सब लोग. This is what I myself follow. And not only me, my wife, my parents, they are with me. उनको महीने में एक बार देता हूँ. और जब कभी जांच कराया है, don't expect your value to be around 90. It will, if it is above 30, be happy. 40 के ऊपर 40-42 मिलता है तो आप एकदम ठीक हैं बैड डेफिशिएंसी में. और वो जो सोशल फैक्टर वाला हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कभी कि इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. अगेन इट डज हैपन. सर ये मतलब मैं 32 साल और कॉर्पोरेट में काम किया हूँ एंड फर्स्ट टाइम आज ये एस्पेक्ट आया है. और मैं मेरे जॉब में हैंडल किया हूँ केसेस बैक पेन ये वो. एंड मैं इंडिया की बात खास करके जहाँ कॉम्पेंसेशन वाला इशू है या अनुकंपा के, यहाँ प्रचलित शब्द है अनुकंपा के आधार पे नौकरी, वहां बहुत होता है. वहां बहुत होता है. एनीवे वे ऑफलाइन लूंगा सर इसको, बट थैंक यू सो मच. थैंक यू. पंकज जी, आई विल कम टू यू, बट बिफोर दैट अवधेश जी ने जो एक बात कही थी सर, उससे रिलेटेड एक मैंने कहीं पढ़ा था तो सोचा आपसे पूछूं इस बारे में. मैंने सुना था कि आरओ जो है रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट जो हम लोग घर में लगाते हैं उसका पानी पीते हैं, it filters out lot of useful minerals from water, and that is one reason and one major cause for bone related problems. Is that correct, sir? That's very true. That's very true. उसको अगर उसका स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि यूजफुल मिनरल्स को नहीं फिल्टर करे. और जब ये हम लोग बात कर रहे थे कि कैल्शियम मिलेगा कैसे, जो डेली रिक्वायरमेंट है 1200-1300, कभी कभी प्रेग्नेंट लेडीज में, ग्रोइंग अप चिल्ड्रन में 2500 मिलीग्राम तक, उसमें एक इंपॉर्टेंट है कि मिनरल वाटर. इट इज रिकमेंडेड कि आप मिनरल वाटर पीजिए तो उससे आपका कैल्शियम बढ़ेगा, उसमें कैल्शियम होता है.
RO system में minerals are filtered out and it's not good for health. It's true. हेमा जी तो आके केम्स Thank you, बता sir. जाती हैं, लेकिन कभी कभी दिक्कत है उसमें. ठीक, thank you, sir. Pankaj ji, sorry, I took your chance. नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन. मैं सर से तो मुझे कुछ हेल्प भी मिल रहा है पर्सनली, कुछ मेडिकल के कारण. तो मैं तो ये जानना चाहूंगा कि दो चीजें हैं कि एक कितना देर वॉकिंग करना चाहिए डेली ओवरऑल, और दूसरा ये कि ये साइकोलॉजी से ये सब चीजें कैसे रिलेट हो जाती है. जैसे मैं सुना हूँ कि साइकोलॉजी से यूरिन पे भी असर होने लगता है, साइकोलॉजी यूरिन के फ्रीक्वेंसी पे, साइकोलॉजी जैसे आपने बोला कि वो अभी जो आज डिस्कस किया वो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड है. मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर ये कैसे हो जाता है, साइकोलॉजी से ये चीजें कैसे, मेटेरियलिस्टिक चीजें इफेक्ट हो जाती है. एक्चुअली मास्टर तो यहाँ बैठा हुआ है. ब्रेन साइकोसोमैटिक, व्हेन वी से दैट इज द ब्रेन व्हिच रेगुलेट्स एवरीथिंग. सोमैटिक, सोमा इज आवर बॉडी. तो मस्तिष्क से सब चीज प्रभावित होता है. अगर आप एंग्सस हैं तो आपको जल्दी जल्दी पेशाब लगेगा. एग्जाम वाइवा होने वाला है, जो कैंडिडेट रहता है उसकी तैयारी अच्छी है कि बुरी है, वो बार बार टॉयलेट जाता है. दीज आर ऑल easily understandable because the controlling authority is here. तो साइकोसोमैटिक इसलिए नाम ही रख दिया गया है कि एक्चुअल प्रॉब्लम इज नॉट इन द पार्ट दैट द पेशेंट सेज और मेंशंस, बट इट्स एट हायर सेंटर. इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इससे लूज मोशन हो सकता है. घबराहट में कई दफा, पता नहीं, मेरी जिंदगी में मैं एक से ज्यादा देख चुका हूं, सांप काट लिया बच्चे को और उसके पेरेंट्स को जो है सो इनवॉलेंट्री, मतलब कपड़े में पेशाब और पैखाना हो गया. ये क्यों हो गया? दिस इज व्हाट वी कॉल साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स. नर्व एंजाइटी डिसऑर्डर्स में होगा, डिप्रेशन में, डिप्रेशन और ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें कि पेशेंट को मतलब जो प्रेजेंट करता है. आई हैव रिसेंटली ट्रीटेड अ बॉय ऑफ 16 years old जो कैटाटोनिया, एक स्टेज हम लोग कहते, कैटाटोनिया शब्द यूज करते हैं, कि वो अचानक उठा और बोला कि अब मेरा कोई भी अंग काम नहीं कर रहा, हिलडुल नहीं पा रहा. जो स्थानीय लोकल डॉक्टर्स जहां का था, उन्होंने देखा, उसको पिन चुभोया, धमकी दी कि तुमको काट देंगे तलवार से, नो मूवमेंट. And then we landed up at my clinic. I had to admit him at the hospital. Suspicious लगा कुछ. उसके बाद उसके कुछ टेस्ट हुए जो हम लोग मसल और नर्व्स के लिए, नर्व कंडक्शन स्टडी, EMG वगैरह कराया. उसके बाद वो साबित हो गया और उसको एंटी डिप्रेसेंट दिया गया. और उसके बाद 2-4 दिनों में उठ के दौड़ के भागा हॉस्पिटल. इट्स अ मेजर प्रॉब्लम. इट्स अ मेजर प्रॉब्लम. are unfortunately not recognized earlier. इसको हम लोग कहते थे अपने समाज में, अक्सर ये करते थे कि ये तो किसी ने, डाइन ने कर दिया है, जादू टोना बोल के, कि रात में बच्चा सोया सुबह उठ नहीं पा रहा था. जब लगा कि नहीं, दिस कैन एक्चुअली हैपन, द साइकी कैन अफेक्ट द सोमा टू सच एन एक्सटेंट कि वो बिल्कुल हेड टू टो पैरालाइज बिहेव कर रहा था, और नो अमाउंट, उसको इंजेक्शन दिलवाए पेनफुल तो भी नो, नॉट अ फ्लिकर ऑफ मूवमेंट. जब टेस्ट किए गए तब उसमें पकड़ में आया, तो फिर जो मैनेजमेंट होता है, थोड़ी सी डांट डपट, थोड़ी सी दवाइयां हैं उसको. और सर वॉकिंग का कितना और देर हाँ, एक क्वेश्चन रह गया पॉसिबल पंकज है? का, जो कि कितनी देर चलना चाहिए. तो वन साइज डजंट फिट ऑल. तो एज के अनुसार भी होता है, लेकिन एवरेज जैसे हम लोग कहें तो हम लोग 3000 स्टेप्स, आजकल सबके पास स्मार्ट वॉच भी रहता है, से शुरू करके 10-12 हजार तक. उसका लेबलिंग है सेडेंट्री लाइफ, माइल्डली एक्टिव, एक्टिव, सुपर एक्टिव. तो 10 to 12,000 स्टेप्स जो चलते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि ये बहुत एक्टिव, सुपर एक्टिव. एजेड पॉपुलेशन 60 एंड अबव के लिए हम लोग कहते हैं कि 6,000 स्टेप्स इन अ डे इज गुड एनफ. टाइम के हिसाब से अगर हम स्मार्ट वॉच नहीं है, तो अगर मुझे पूछ रहे हो सवाल, पंकज ने मुझसे पूछा है, तो अभी जैसे बताया था वरुण को कि स्टार्ट वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर डेली, ब्रिस्क वॉकिंग. इफ यू डोंट जॉग, डोंट रन, कोई दिक्कत नहीं है. ब्रिस्क वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर इज गुड एनफ फॉर यू. ओके.
Thank you, sir. Thank you a lot, sir. Thank you a lot. Avdesh ji, Welcome. do you have a question again? I can see your hand is raised. Yes, sir. One more question. सर, ये जो आपने बताया कि वो एंजाइटी होती है और उसकी वजह से पेन्स होते हैं ऑल ऑफ दैट, सो वो एक वेरी लिटिल नॉलेज, बट एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उसका क्या रिलेशन है सर लोअर बैक पेन से, एंड हाउ टू वर्क ऑन आवर ओन सेल्स टू मैनेज दैट? You have to join sadhana with them. But yes, there are some helpful hormones, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स के बारे में सुना होगा. वॉकिंग में क्या होता है कि इसका सेक्रेशन बढ़ जाता है. There's a feeling of well-being, and that helps your muscles work well. And if the muscles around the joints and bones are working to its full efficiency, the bones and joint get strengthened. अगर यही डिप्रेशन में इसका उल्टा होगा, एंटी सेरोटोनिन, उसका नाम है अलग, एंटी एंडोर्फिन, तो वो क्या कर देगा, मसल सुस्त हो जाएंगे, फ्लैबी हो जाएंगे. इफ द मसल्स आर फ्लैबी, मसल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो फिर वो बोन्स एंड जॉइंट्स को भी अफेक्ट करेगा. दिस इज द रिलेशन. जो अच्छे हार्मोन हैं, जो जिससे कि देयर इज अ फीलिंग ऑफ जॉय, वो हार्मोन सेक्रेट करने हो, इसके लिए जरूरी है कि आप एक्टिव रहें. वॉकिंग इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि यू स्टार्ट वॉकिंग एंड विद इन 5 मिनट्स, अगर आपको सही जगह मिल गया है और कंपनी है तो और बढ़िया, अकेले भी चल रहे हैं तो देन यू से, कितना भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम लगता है कि थोड़ी दूर चला गया है, यू स्टार्ट फीलिंग वेल, एंड देयर इज अ हार्मोनल बेसिस टू दिस फीलिंग. Okay. Thank Varun ji, thank you. Varun ji has raised his hand. May I request you to keep it short because there will be other people शॉर्ट also ही है, बस शॉर्ट ही है, हल्का सा. सर वो जो पैरों में वीकनेस, नंबनेस, आपने 2 वर्ड उसमें यूज किया था, और एक जो कॉमन हम लोग यूज करते हैं झुनझुनी लग जाना, तो तीनों सेम है कि अलग अलग है? नंबनेस और झुनझुनी अलग मन है, उसमें टिंगलिंग सेंसेशन, उसको नंबनेस की एकदम आपको लगे कि भोथरा लग रहा है कुछ, उसमें जैसे पैर जमीन पे रखे अनुभव नहीं हो रहा है, कांटा चुभ गया पता नहीं हाँ, चले, तो नंब हो जाना उसको कहते. वीकनेस तो अलग होगा उसमें कि जब लगता है आपको पैर पावर, पैर उठाने में दिक्कत हो, पैर आगे बढ़ाने में दिक्कत हो. कुछ विटामिन, कैल्शियम के अलावा और कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी से भी ऐसा होता है. उसमें B12 को आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, लाइक विटामिन डी. ओके सर, ये ठीक है सर, थैंक यू. सिनोनिमस नहीं, पर्यायवाची नहीं है, तीनों अलग अलग है. वीकनेस कमजोरी हो गई, अलग नमनेस अलग. जिसमें भोथरा लगना, टिंगनिंग में अलग अलग टर्म्स. ठीक है सर, थैंक यू सर. Arun sir, I think you have a question, sir. So if please go. everybody else is true तो in front of a infinite wisdom, ये थोड़ा सा कुछ desultory information है which I wanted to share, and they have all been practiced upon me. It will not be essentially in the same order. Earlier it was in the same order starting from Pankaj, how does psychosomatic help to walking? So let me go fast. Number one, walking का जो मेडिकल और फिजिकल एस्पेक्ट प्रूवन है. नंबर वन, आप 9 मिनट से लेकर के 10 मिनट से कम वॉक करते हैं तो उसका बहुत अधिक फायदा नहीं होता है. वो 9 मिनट 10 मिनट का भी वो एल्गोरिदम है, उसके बारे में बात करना यहाँ पर सही नहीं है. मगर प्रूफ क्या है कि आप जब वॉक कर रहे हैं या कोई भी लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी को वो राइट डायरेक्शन में हेल्प कर रहा है. सबसे बड़ा प्रूफ है, अपने बॉडी पर देखिए, अगर खुलने का अंदर से अनुभव हो रहा है, if you have a sensation of something opening inside the body anywhere, that means you are doing the thing rightly. Number one. Number two, जिनको वॉक करने के लिए काफी लंबी जगह उपलब्ध नहीं है, घर में ही वॉक करते हैं, तो दूसरी बात ये, अगर आप 8 बना करके वॉक करें, the effect is exactly 3 times more than the normal walking. So I think everybody has understood what I mean by 8. You walk in 8, the effect is 3 times. मतलब अगर आपको जो 45 minutes to 1 hour का जो वॉकिंग है, वो 35 minutes में exactly same effect, probably more, हो जाता है. नंबर 1, सॉरी नंबर 2. नंबर 3,
एक आईआईटी मद्रास और वेल्लोर इंस्टीट्यूट का मैंने रिसर्च पढ़ा था विटामिन डी के बारे में, तो उन्होंने इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसके हिसाब से बात किया था कि हर जगह वही बात सही नहीं होगी। तो वो बोलते हैं जो धूप लेते हैं वो दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच में 15 मिनट से 20 मिनट काफी है, लेकिन वो धूप 3 जगह पर पड़ना चाहिए, फेस पर, चेस्ट पर और पिछले वाले हिस्से पर। तो वो बोलते हैं कि 15 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू गेट द एसेंशियल विटामिन डी। अगर 11 से 12 बजे नहीं ले पाते हैं तो शाम को 4 बजे से, लेकिन फिर वो हाफ एन आवर होना चाहिए। पोजीशन रिमेन्स द सेम। नंबर 4, साइकोसोमैटिक के बारे में तो पंकज तुमको बहुत सारा मटेरियल गूगल पर मिल जाएगा। बहुत सिंपल ये है यार कि ब्रेन में जो लेयर्स हैं तो उसमें फ्लूइड होते हैं, उनका जो सॉल्ट लेवल है, आयनिक लेवल है, वो काफी हद तक हमारे बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट करता है, रेगुलेट भी करता है। कंट्रोल। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो जो प्रेशर पड़ता है तो उससे फ्लूइड प्रेशर बढ़ने से सरप्राइजिंगली बॉडी का फंक्शन कम हो जाता है। जैसा उल्टा है कि अधिक प्रेशर पड़ने पर अधिक सिस्टम रेगुलेट होना चाहिए, उल्टा है। इफ द प्रेशर बिकम्स मोर, द फंक्शंस ऑफ द बॉडी बिकम लेस इफेक्टिव। नंबर 2 इज दैट इसे जो दवा वगैरह खाते हैं या हम लोग जो आयंस खाते हैं, सॉल्ट खाते हैं, वो बेसिकली वो लिक्विड के कॉम्पोजिशन को और उसके प्रेशर को अफेक्ट करता है, एंड हेंस बॉडी इज अफेक्टेड। एंड थर्ड इज यू आर अ साइंस मैन। अभी जो लेटेस्ट की है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, entire body works on the electromagnetic frequency. Different parts of the body produce different type of frequency. If they match with the frequency arising from and received by the brain, that affects the body. Two parts of the body which are very directly controlled by the brain are number 1 नाभि। पेट का जो नाभि का हिस्सा है वो एकदम उसका नर्व्स डायरेक्टली लिंक्ड है ब्रेन से। इसीलिए जो लोग प्राणायाम करते हैं या पेट को काफी अंदर दबाते हैं, मैं उस आसन का नाम भूल रहा हूँ प्राणायाम का, एकदम बिल्कुल नाभि को एकदम पीछे दबा करके जितना दबा करके रोक सकते हैं सांस रोकने के समय भी, तो ही लोग बोल रहे हैं कि वहां का जो एक नर्व उसको हैप्पीनेस, उसका नाम ही दिया है हैप्पीनेस नर्व। मतलब वो प्रेस करने से सडनली यू स्टार्ट फीलिंग द सेंस ऑफ हैप्पीनेस। Once again, that nerve is coming from an exactly related spine, जो कि अवधेश पूछ रहा था। अरे वो तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि वो स्पाइन का तो डायरेक्टली लिंक है ब्रेन से। तो ब्रेन में कुछ भी अगर माल फंक्शनिंग हुआ माइंड के लेवल पर, which is affecting the secretion of the chemicals either in higher amount or lower amount, where will the effect go directly? Obviously, fluid moves down the lower part of the spine first. And then most of the problems in the back are around the lower spine. They are mostly psychosomatic. And I'm happy that you said Dr. Jha mentioned it. वो ठीक ही था कि डॉक्टर लोगों का जरा एथिक पार्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया, हम लोग समझ ही रहे हैं। What can be done not very easily, comparatively with lesser stress, they are handling medicine. तो झा जी pointed out very correctly, जो psychosomatic part खासकर ब्रेन से जो लिंक है स्पाइन का और पीठ का काफी रिलेटेड है। मेरा जो क्वेश्चन था झा जी, हम लोग आज नहीं बात करेंगे। और आप समझ, जो कैल्शियम का जो ये ट्रीटमेंट है उसमें बहुत केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है। तो आप उनका लोग कैल्शियम वगैरह दे देते हैं या विटामिन डी, विटामिन तो खैर देना ही चाहिए, लेकिन उसमें सचमुची केमिस्ट्री हैज गॉट लॉट्स ऑफ रोल टू प्ले, बायोकेमिस्ट्री रिगार्डिंग द एसिमिलेशन और नॉन एसिमिलेशन ऑफ कैल्शियम। सबसे बड़ी जो डेंजरस बात है, मैंने अपने ऑडियो में कही थी, अगर कैल्शियम प्रॉपरली एसिमिलेट नहीं हो रहा है और उसका अमाउंट केमिकल के थ्रू अधिक है, it starts getting depositing in the different parts of the body, starting from heart, the kidney, of course the veins. That also creates trouble. But that is something that I would like you to take a different session. How? Because we shall go to a doctor and we shall accept what the doctor says. Some of the times the doctors are probably not handling the thing properly, especially when they are taking the softer route through chemicals. So those were the reasons why I posted the question. I hope things which I said had some clarity in the minds of Avdesh and Pankaj. No, very much. One more thing is coming to my mind immediately. थोड़ा गड़बड़ सुनने में, लेकिन I have used it on myself. Number 1, chia seeds. चिया सीड थोड़ा बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत
सस्ता भी नहीं है लेकिन महंगा भी नहीं है, मतलब हम लोग जिस ग्रुप में जो लोग हैं बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, गूगल अमेजन से मिल जाता है। आई हैव फाउंड इट वेरी इफेक्टिव। सिर्फ शाम को चिया सीड को फुला देना, सवेरे खा लेना है। आई हैव फाउंड इट मोर इफेक्टिव एंड मेनी अदर थिंग्स लाइक पालक, जो कि झा जी ने जिसके खिलाफ बताया, बहुत सही बताया, वॉगलेट है, या भिंडी। चिया सीड्स आई हैव फाउंड वेरी वेरी यूजफुल। एंड नंबर 2, जो लोग अंडा खाते हैं, ये मैं सचमुच लिटरली गांव की भाषा में रामबाण बता रहा हूँ, जो अंडा खाते हैं वो अंडे के छिलके को साफ करके सुखा दें धूप में, उसको क्या बुकनी बोलते हैं, वेरी फाइनली ग्राउंड, half a tablespoon in 1 month increased my vitamin D levels 3 times, and making the statement with full responsibility. As a छोटा मोटा scientist or a fraud scientist, I stopped taking all the vitamin D supplements. I stopped taking bhindi or chia seeds. I measured my vitamin, I did not measure, I got it measured, 30 था. For 1 month I took half a tablespoon of, डिफिकल्ट है मगर बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, अंडे के छिलके को साफ करके सुखा करके पीस करके रखा। एग्जैक्टली इन 1 month माय विटामिन डी लेवल केम टू 6। So these two things also are very very helpful, and of course we cannot do without vitamin D, वो तो said है। So with this I rest. Thank you sir, thank you for explaining all this so scientifically. थैंक यू अरुण जी। I could इससे relate एक फायदा, अब आशुतोष एक मिनट, इससे अरुण जी के इंटरवेंशन से एक फायदा हुआ कि एक सवाल का जवाब देना छूट गया, वो कैल्शियम के बारे में और सीड्स के बारे में। आजकल जो एज, जिस एज में आजकल हम लोग रह रहे हैं, मे बी 20 से बात कर रहे हैं, ये जो डिकेड है 21 से 30, ये सीड्स का है। जितनी भी चीजें हैं सब सीड्स जो है आजकल यूजफुल हो गए हैं। एक एंटी ऑक्सीडेंट का एज आया, लाइकोपिन का एज आया, जिनसेंग का एज आया, ये हर डिकेड में। अभी सीड्स वाला कैल्शियम के बारे में आई शुड हैव मेंशन। एक्चुअली हम लोग क्या रेकमेंड करते हैं, एक 500 मिलीग्राम का टैबलेट रहता है नॉर्मली, उसमें एलिमेंटल कैल्शियम उनकी के 120 मिलीग्राम रहता है। अब नया जो आया है वो 1250 मिलीग्राम का टैबलेट्स आता है, जिसमें 500 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम रहता है। तो एक टैबलेट अ डे। और एक चीज जो शेयर करना बहुत जरूरी था हम लोगों के ग्रुप पे, कि ये कभी साबित नहीं हुआ कि कैल्शियम इनटेक की वजह से यूरिनरी स्टोन, किडनी में या यूरेटर में या ब्लैडर में स्टोन होता, ये साबित नहीं हुआ। जिसको स्टोन हो गया उसको हम लोग कह देते थे ऐसे ही कि कैल्शियम वाला चीज कम खाइए, अंडा मत खाइए, पालक मत खाइए, मूली मत खाइए, टमाटर मत खाइए। प्रिकॉशन इसमें क्या है, और कैल्शियम के प्रिपरेशंस जो इजीली, अब जो पहले कैल्शियम कार्बोनेट मिलता था सस्ता था, उसके बाद कैल्शियम साइट्रेट और साइट्रेट मैलेट थोड़ा महंगा हो गया, और कैल्शियम के साथ विटामिन D3 के मेटाबोलाइट्स ऐड किए गए, कैल्सिट्रियोल, उसके साथ कुछ एलिमेंट मेटल और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लाइक आज जो कैल्शियम का प्रिपरेशन होता है उसमें यूजुअली जिंक और मैग्नीशियम रहता है, क्योंकि इट वाज फाउंड दैट दीज एलिमेंट्स हेल्प इन एब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ कैल्शियम। तो कहना ये चाह रहा था कि कैल्शियम आपको ओरली अगर रेकमेंड करते हैं डॉक्टर, तो उससे डरना नहीं है। ओनली थिंग दैट नीड्स टू बी डन, लेस्ट it gets precipitated in some vital organs, is to have proper hydration. आप अगर पानी जितना रिक्वायर्ड है आपके एज के हिसाब से और मेडिकल जो आपका स्टेटस है उसके हिसाब से, उतना पानी अगर आप पीते हैं तो कैल्शियम लेने से डरिए मत। ओल्ड एज में लेडीज को स्पेशली हम लोग 1 ग्राम दे रहे हैं, एक टैबलेट 500 वाला जो आता है 2 बार, तो उससे डरने की बात नहीं है। और ये प्रूवन, बहुत सारे स्टडीज हैं। अभी आज जो मैं घर लौट रहा था क्लिनिक से, तो एक साइट पे मिल गया, वो मायो क्लिनिक का था। मान सकते हैं कि सही इंफॉर्मेशन रहता है, उसमें कहा कि नहीं, इट्स नेवर प्रूव। इनफैक्ट उसका जो कंक्लूजन था, मेटा एनालिसिस था एक, उसका कंक्लूजन ये था कि अगर आप कैल्शियम नहीं लेते हैं तो आपको स्टोन, यूरिनरी स्टोन्स होने के चांसेस ज्यादा है। आपका हार्ट में जो हम लोग सीटी कराते हैं, एंजियोसीटी, नॉन इन्वेसिव प्रोसीड्योर, उसमें कैल्शियम स्कोर होता है। तो वो जो लोग कैल्शियम इंटेक जिनका कम है उसमें ज्यादा होने का चांस।
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, लेकिन वो सीड्स के बारे में Sorry, बताना था और ये बताना जरूरी था sorry कि for यू adding, नीड sir. नॉट बी अफ्रेड ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स. Excellent. I mean, basically, तो I mean, you have explained very beautifully को water को लेना ही एक्स्ट्रा. वो जो कैल्शियम वाला था वो मैंने मेयो क्लिनिक के रिपोर्ट को मैंने सप्लीमेंट किया, हार्वर्ड से आया था. उसमें वो बोल रहे हैं कि जब कैल्शियम कम है तो बॉडी स्टार्ट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म रिएक्शन. इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग certain things to try to remove the deficiency of calcium. Those are the ones which cause block at some places. तो कैल्शियम तो इधर से कैल्शियम तो कम ये नहीं ऐसा होना है ना चाहिए. अरुण तो जी, वो जस्ट बाय चांस ये आगे मैंने पढ़ा फिजियोलॉजी में था. पढ़ाया जाता है कि इफ द कैल्शियम लेवल्स आर लो, द बोन्स स्टार्ट शेडिंग जो कैल्शियम स्टोर है उससे ब्लड स्ट्रीम में मेंटेन करने के लिए. दैट कॉजेज प्रॉब्लम. यस, थैंक यू वेरी बिल्कुल मच. बिल्कुल सही सर. एक सॉरी अवधेश जी, बिफोर आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम शेयरिंग दिस. मैं एक अपने आर्मी के काफी सीनियर थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास बैठा था, तो एक लेडी आई उनके पास, और वो लेडी यंग लेडी थी एंड शी हैड अ स्मॉल किड विथ हर, एंड शी केम विद द कंप्लेन कि मुझे काफी पेन होता है, दर्द जॉइंट्स में, बोन में काफी दर्द होता है. तो जो डॉक्टर साहब थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, ब्रिगेडियर अग्रवाल और समवन, ही फर्स्ट क्वेश्चन ही आज, तुम इस बच्चे को दूध पिलाती हो? शी सेड हाँ मैं पिलाती हूँ. ही सेड कि 1 साल से ज्यादा का बच्चा है तुम्हारा, इसको दूध पिलाना बंद करो, अपना दूध मत पिलाओ, बाहर का दूध पिलाओ, और बाकी लेटर ऑन ही मस्ट हैव प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन्स. उसने कहा कि सबसे ज्यादा तुम्हारे बोन्स को इफेक्ट कर रहा है. तो when you said this, Dr. Jha, then I recollected this incident, so that is why I don't know. और एक It और must be इसी a में common thing. जो एक सेल मेम्ब्रेन, आशुतोष तुम्हें इसका हम जवाब दे देते हैं, इस पर कमेंट कर देते हैं, वो दोनों पे कमेंट हो जाएगा, अरुण जी पे और आशुतोष जी दोनों पे. एक सेल मेम्ब्रेन की जो बात अभी अरुण जी कर रहे थे, नेचुरल एग सेल मेम्ब्रेन is now available in tablet and capsule form, used for maintaining the integrity of bone and for maintaining the integrity of the joints. दोनों में नेचुरल एग सेल मेम्ब्रेन का यूज हो रहा है. तो अगर इनका विटामिन डी लेवल बढ़ गया, जो एग सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, तो वो एकदम सही है. और दूसरा, दूध पिलाना, जो महिलाएं दूध नहीं पिलाती हैं अपने बच्चों को, उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, और जो ज्यादा दिनों तक दूध पिलाती हैं उनकी भी हड्डियां कमजोर होती हैं. Yes. दीज आर सर्टेन फैक्ट्स जो बड़ा इंटरेस्टिंग है. कैल्शियम पर तो बहुत सेशन हो सकते हैं. जी जी सर. सॉरी अवधेश जी, I actually I should have come back to you. तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, सॉरी सर, एंड अगेन यू कैन चूज टू आंसर इट सेपरेटली. जो सीटी स्कैन होता है, कोरोनरी सीटी स्कैन, उसमें अगर बहुत हाई कैल्शियम दिखा रहा है, तो how does this calcium intake that you talked about in normal circumstances has to be balanced against that? You can choose not to answer here, common है, but because this is very specific observation, sir, so I can talk to you later on that as well. Thank you, sir. Okay, Abdesh, we will talk about it. Right, sir. So I think we have almost covered 1 hour 45 minutes on this call, and I don't know, should we ask for one last question before we call it off, sir? Dr. Jha, sir? And I'm here. Any other I know I don't have problem. Okay. Any last question, last point from anyone? Avdesh ji, I can see him again. I can only say one thing, sir. You're the first doctor I have met who has explained things in such simple words, such, क्या बोलूं मैं, कोई मैंने समझने में बड़ी आसानी हुई सर. जार्गन नहीं था. You were so connected to the audience. आपको पता था कि ये लोग डॉक्टर नहीं है, तो इनको जैसा Thank you, Abdesh, for the compliment. But the reason, the reason behind it, I have never been associated with a corporate hospital. So I deal with patients who are not
not so lucky to have got educated in top schools. They are from poor backgrounds. Yes. It has been a tough and arduous journey for me, but I think more than once I used this sentence when I was talking to Aruni one-to-one, that I have enjoyed this journey. मैंने हिंदी में कभी लिखा था फेसबुक पे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास दो विकल्प थे, एक राजमार्ग था और एक पगडंडी थी। मैंने पगडंडी पे चलना स्वीकार किया, उसमें कांटे हैं, गड़ते हैं, तकलीफ होती है। That's why there are people who can talk on and on these subjects, but very few people will understand. जो पोस्ट ग्रेजुएट्स है, मैं मेडिसिन का और ऑर्थोपेडिक्स का उसकी बात मैं नहीं कर रहा। I have had the opportunity of discussing these aspects with very poor and almost illiterate population. So I have to make myself understood by such population. That has been my life 42 years now in this profession. Really wonderful, sir. Thank Really wonderful. Thank you, sir. Wonderful session. Thank you. And in fact, in the end, I would also like to say here that we all are not or must be aware that the kind of stress that the doctors go through, they themselves go through, and particularly surgeons when they have long hours of work. So how they manage themselves, I think we can talk to Dr. Jha some other time. So thank you so much, and thank you everyone for joining and very inquisitive and curious questions. So with that, we would close the session. Thank you. Have a good day, everyone. Thank you very much. Bye.